hearing many things which do not exist on ground. Development, brotherhood, peace, rightly said by Honorable MLA. That the peace secured under the bayonet of the gun is not peace at all, it is a suppression. And that can never endure. And it has never endured in past. And let me say it with certainty. I hope this honorable host, this august host, will appreciate it. Before the Honorable Supreme Court, there were two questions to be answered. One was when we filed the petition. The first question was that the process adopted, the way adopted by the Parliament and the Governor, the then Governor, was unconstitutional. The second question which was to be answered by the Honorable Supreme Court was, and that came for the first time before the Supreme Court, because never ever in the history of independent India any state was reduced to a union territory. There was no precedent before the Supreme Court, there was no convention before the Supreme Court to answer this question, whether Parliament unilaterally, without seeking the consent of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, can change the boundaries of the state of Jammu and Kashmir, can reduce a state into a union territory. That was the pivotal question before the Honorable Constitutional Bench of the Supreme Court. And I just want to remind this august House that Union Government, through their Attorney General, made a pledge before the Honorable Supreme Court that it is this union territory status is a temporary. We are going to restore it very soon. That was the statement given by the Attorney General before the Constitutional Bench. And you know what happened? The Constitutional Bench, headed by Honorable Chief Justice of India, deferred this vital question, constitutional issue, to be decided. And in the judgment they said that we need not to decide this issue at this moment, because the Attorney General has given us an undertaking that they are going to restore the statehood very soon. Therefore, we defer this question to be considered for future litigation. Very strange enough. But yet the Honorable Supreme Court acted upon these suggestions made Attorney General. Almost give or take a few days. 1 year has lapsed. And there is nothing, not even a whisper on behalf of the Union Government to restore the state. I intend to go back to the Honorable Supreme Court and definitely I'll go. I'll be the Honorable Supreme Court to explain
words used in the judgment itself. When they have said that as early as possible, the statehood must be restored to Jammu and Kashmir. It is not only a statehood for us, it is an honor, a dignity of the people of Jammu and Kashmir. You have indicated, and another Supreme Court shut its eyes on the assurance given by the Attorney General. We will request through this August House the Union Government to restore our statehood as early as possible in compliance with the judgment of the Honorable Supreme Court. Lest we should go back to the Supreme Court seeking a further interpretation of the judgment of the Honorable Supreme Court. How can I forget that Honorable Lieutenant Governor in his address significant mention of restoration of the statehood and restoration of to choose a secular democratic country. We opted for a secular democratic country to be a part of. And we feel proud even today. We may have grievances with the Union government. We may have differences. They may have done injustice to us. But we still feel proud to be special status, which was granted to us by none else than the Constituent Assembly. Of this great nation which framed the Constitution of India. We are not going to stop here. And we are ready to sacrifice. We are ready to sacrifice our posterity. And I want to tell those who says that we don't need special status. You have a right. You have a constitutional right also under Article 90 to bear of your rights. If I have a constitutional right to possess the property, I have a right to abandon the property. But who? This right belongs to the posterity. And we are supposed to protect it. We are supposed to protect it like our own property, so that our posterity will remember us. They will name us with dignity. We have seen an astrophy by one of the philosophers, a wise man, that you can befool all the people for some of the time, some of the people for all the time, but you cannot befool all the people for all the time. So you have tried to befool the nation on this ground that the special status has breeded violence, on this ground that this has been
This has been a stumbling block in the development of this. But data prove otherwise. Your own data proved it that we are far better. We were better in the sector of health. We were better in the sector of education. We were better on per capita basis than any other part of this country. And how come you say that this special status has breeded corruption? It has been a stumbling block for the development of this Jammu and Kashmir. We have said earlier also. I want to just bring on record of this honorable house that this house will regain its pristine glory one day. One day we will get back our special status. Together we will fight for the dignity of Jammu and Kashmir as well. I am from Jammu. We want to get back the dignity of the Jammu and Kashmir together. We want to march ahead, taking a great leap now with the cooperation of all the communities of this state. Together we will fight. Together we will get back our lost glory. Together we will restore the dignity, and one day I hope this house will again be the most powerful house of this great country. Thank you. Nizamuddin Bhatt साहब. Honorable Speaker, इससे पहले की मोशन के आपने खड़ा होकर कुछ कहो. एक जाती कैफियत का इजहार करना चाहता हूं. दिल नहीं चाहता था खड़ा होकर कुछ कहूं. इस माहौल में तो 3 दिन से हम देखते आए, लेकिन आवाम के साथ वादाबंद है कि आपकी आवाज बनेगी और एक ऐसे ऐवान में आवाज बनेगी जिसे जमहूरियत का मंदिर कहा गया, जिसके बारे में मुकद्दस लफ्ज का इस्तेमाल होता है, जहां इज्जत और सम्मान की बात होती है. 3 दिन से देखते आए हैं इज्जत और सम्मान कहां, बदतमीजी की कोई हद होती है, एक इंतहा हो गई. मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपनी जमात की तरफ से, send just 2 words to Parliament and Prime Minister on behalf of Congress कि सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन हमें एक मौका दिया था कि हम जमहूरियत का हिस्सेदार बने. मुल्क में जमहूरियत के माहौल में अपने लोगों के अमन और तरक्की की बात कर सके. जो यहां का निजाम है, जो आईन ने दिया है,
जिसके लिए बहुत सी कुर्बानियां, उसका लिहाज करें और हमें मौका दे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मंशा के बाद कि हम भी इज्जत से लोगों के मसाइल की बात करें, उनके हल की तलाश करें। और जो जमहूरी मुल्क एक बड़ा मुल्क है, इसमें हम भी ये महसूस करें कि हम let the message go to Parliament and Prime Minister that it's your party. You are the dispensation, you are at the helm. It's your party. We did not show only dishonor to the House, but are trying to force a denial to the expression of the will of the people, जो उन्होंने आपके आईन, आपके निजाम और आपके इंस्टीट्यूशंस के हवाले से एक्सप्रेस की, डिस्प्ले किया इलेक्शन। एक ही बात साफ कर लो, एक ही दफा पार्लियामेंट साफ करे, हिंदुस्तान का निजाम साफ करे, मुल्क का निजाम साफ साफ कहे कि आप यहां रह सकते हो लेकिन हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप यहां रह सकते हो लेकिन आपको बात करने की इजाजत नहीं होगी। आपके इदारे बनेंगे और बनेंगे हमारे मंशा पर और बिगड़ेंगे तो हमारे मंशा पे। जब तक ये बात साफ साफ नहीं होती, इसका समझ ले, इस जमहूरियत से शायद ही इस्तेफादा हासिल कर सके। आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इमेज का शायद ही इक़्तिदार बन सके। मुझे उम्मीद है ऑनरेबल स्पीकर दैट आवर सेंटिमेंट शुड बी कन्वेड, और वहां जो हमारे मेंबरान हैं, रेजोल्यूशन onus is now not on this house or people of Jammu and Kashmir. जो इस हाउस को करना था तकद्दुस से किया। onus is now on New Delhi. Let us wait. और हमारे मेंबरान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो वहां ये कह दे कि असेंबली का ये मंशा है। दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय मेजॉरिटी मैंडेट थ्रू मासेस, इट्स गवर्न्ड बाय मेजॉरिटी मैंडेट। उसका उनको आदर करना चाहिए। जहां तक एलजी साहब के एड्रेस का सवाल है, यह ये एक्सप्रेशन है restoration of full statehood and constitutional guarantee. I will not focus more on it because people have expressed their will. This house has expressed their will. Ball is in the court of New Delhi. We hope for a judicious disposal of whatever has been done. लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, एक शिकवा करूंगा, जो रेजोल्यूशन बना जब एग्रीगेशन हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया which I feel from the content of the resolution that was more stronger a message than we the suppressed people could make. And in that resolution, certain sections who want us to be subjugated. There may be certain sections in the society, Indian civilization and culture, Indian nation, who don't want us to be part of them in equity, in judicial
who wanted us to be an honorable part of this great country. They extended grace. They extended greatness. We will reciprocate. We will not be coerced or suppressed by divisive voices. इस मामले पे, इस सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल मामले पे इतना ही कहूंगा। और एक पहलू है, वह चैलेंज। Can we progress if the atmosphere is vitiated as this? Can we make a forward movement? If there are coercive measures, if democracy is not allowed to function, if institutions are disempowered, if there are laws which only punish Can we, if there is no peace? क्या हो रहा है यहाँ? कल तक तो एक क्लेम था यूनियन गवर्नमेंट का कि we are able to bring peace and we have brought peace. Even they said we have brought ideal peace. Soon after elections, what changed? There are leaders who have already made it known that this is the subject of, we are in unity, we understand the laws, this is the subject of union government. Security agencies are in Indian control. We respect them. We see them as our protectors. They have been doing good job. They have been doing good job till yesterday. They will be doing good job overnight. They owe an explanation to common masses. Who were yesterday hoping for security, stability, peace, prosperity, and are now apprehensive about even their own personal security. We cannot live under fear.
great country should show some concern for its own obligations. If they can stand up at international level as a contributory country to peace, education की बात, ऑनरेबल मेंबर, अभी अगर आप अपनी पार्टी आपको 2-3 मिनट और दे सकता हूँ, मगर अगर आप लंबी तकरीर करेंगे फिर आपको कोई ऑनरेबल मेंबर बोल नहीं सकेगा। 3 मिनट नहीं, मैं खत्म करूंगा। नहीं 3 मिनट तो फिर उतना ही तक मैं आपकी पार्टी। लीडर ने ये नहीं कहा कि मैं बोलूं, उसके नाबालिग भाई ने, he was a juvenile, स्टूल पेंटिंग के पर्चे में उसका नाम आया, कोर्ट में एक्विजल हुआ, but twice she was denied joining service. एक लीगल ओपिनियन लॉ and there are instances of law and order violation in court acts. उनको तो इससे निकालो, कम से कम उससे निकालो. I will request Chief Minister to have a personal review of many cases. एक जर्नलिस्ट था वहां, सजाद शाहपुर का, पीएसए में बंद हो गया किसी स्टोरी पे, उसका भाई लगा ये वो पीएचडी है या मास्टर सब पूरा, मुझे उसकी तालीम का सिलेक्ट हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग करने देते आपका वेरिफिकेशन डिले होता है। यूथ एम्पावरमेंट के लिए एक जमाना था रिफॉर्मेशन, यहां गनमैन आए इस असेंबली, वो भी एक जमाना, वो मिनिस्टर बने, उनको आदर मिला। आज गरीब बच्चों को पुलिस डिनाइड, गुरेज इज डिनाइड, प्लेन इज डिनाइड, द नेशनल हाईवे स्टेटस। रिकमेंड करिए गडकरी साहब को, जब इधर आपने रेल लाई, जहाज उड़ाए, तो हमें रास्ता तो दे दो। और तीसरी बात जो यहाँ सर्विसेज से ही रिलेटेड है, यहाँ पेंडिंग केसेस है, रेगुलराइजेशन, डेली वेजेस, यहाँ एसएसआरबी में वेटिंग लिस्ट पेंडिंग है साल। यहाँ डिफरेंट सेक्टर्स, रूरल डेवलपमेंट में, स्पोर्ट्स में बच्चों को 5-5 हजार की तनख्वाह पर। Please. Many members want to participate in the discussion. इज्जत करता हूँ अपने सब लोगों की, हालांकि आज अफसोस हुआ 2-3 दिन से असेंबली में हल्ला गुला हुआ, उसके लिए बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हाउस में चलता है, पहली बार नहीं हुआ। हालांकि पार्लियामेंट सबसे बड़ा ऐवान है, वहाँ भी चलता रहता है, लेकिन एक दुख की बात है जो मेरे बीजेपी के साथी हमें रोज एक ताना देते हैं, उससे मेरे दिल को ठेस लगती है। मेरा ताल्लुक उस घर से है जिसने 1947 से लेकर आज तक बात के खिलाफ कोई न जबान से कोई बात की, न अपने आमाल से कोई ऐसी बात की कि भारत के संविधान या भारत की जो तवारीख है उसके साथ धोखा हो या उसकी तरफ से ज्यादती हो। क्या उस वक्त हम कश्मीरी मुसलमान नहीं थे जब यहाँ तकसीम हो, लोगों ने मजहब की बुनियाद पे मुल्क बनाया? क्या हमारे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त एक मुसलमान कंट्री को छोड़ के सेकुलर भारत के साथ इस लिहाज से इल्हाक किया था, वकालत की थी, और सब लोगों ने उसका साथ दिया? क्या बीजेपी वाले हमारे साथी वो दिन भूल गए जब पाकिस्तान से कबायली कश्मीर में आ गए, तो यहाँ कश्मीर में अपने पंडित भाइयों, सिख भाइयों की जान बचाने के लिए कितना खून उस वक्त निशावर किया? क्या अपना हक जो जमहूरियत में हमें दिया है, पार्लियामेंट में उस वक्त दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, गांधी जी ने दिया, क्या इनको गांधी जी की याद नहीं आती जब उसको कश्मीर में किरण दिखाई थी? क्या अब अपने मसाइल उठाना भी आतंकवादी हो गए? यह हमें देशद्रोही कहते हैं, अलगाववादी। मैंने खुद नारा सुना।
परसों आपने जनाब ने और बिचेली रखी थी, उसमें 57 लोगों के नाम थे। उसमें वाजपेयी जी का नाम था, आपने प्रणब मुखर्जी जी का नाम था, चमनलाल गुप्ता जी का, प्रोफेसर भीम सिंह मदन, और उसमें शहीद शेख गिलानी का भी नाम था। मैंने उस वक्त उनका नाम सिर्फ इसलिए लिया था कि वो इस आगस्ट हाउस के मेंबर 3 हुआ थे। क्या उनका नाम लेना भी एक MLA की हैसियत से आतंकवादी, अलगाववादी, पाकिस्तानी? कितनी देर तक हम कश्मीरी ये नारा सुनते हैं? जब कोई हक मांगते हैं ये बस एक ही लेवल लगता है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये अलगाववादी। पता नहीं क्या तमाशा, क्या मुसलमान होना कोई गुनाह की बात है हिंदुस्तान में? क्या हम इस देश से प्यार नहीं करते? पिछले साल हमारे रिश्तेदार ने भारतीय फौज के शाना बाशाना लड़ते हुए कुकरनाग में अपनी जान दी। क्या मेरे बाप को आतंकवादी ने गोली नहीं लगाई थी ताल में? ये आप खुद उसके मुशाहिदा आपने खुद देखा, कई बार आपने मिजाज पूछी थी, क्या उन्होंने वो गोली नहीं देखी जो मेरे बाप को लगी थी? क्या हम इसलिए गोली खाई है कि ये आज ये ताइन के ताने? क्या आर्टिकल 30 से, हालांकि मेरे नेशनली वायलेंस को स्पेशल स्टेट्स पता नहीं क्यों डरते हैं 370 की बात, ये कोई गुनाह की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेशक अपना फैसला किया है, लेकिन हमारे लिए रास्ते बंद नहीं किए, जद्दोजहद के रास्ते बंद नहीं किए। हम पाकिस्तान नहीं मांगते, इस देश से अलहदगी नहीं मांगते, कोई अलग मुल्क नहीं मांगते। हम वही मांगते हैं जिसका वादा पार्लियामेंट ने किया है, जिसका वादा उस वक्त पता नहीं क्या कौमी अड़चन उस वक्त रही, हम छोटे थे, पता नहीं कोई गलती होती है, कोई धारा रह गई तो सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल गया उसको कलरन करने का। मगर हम रोज मांगते रहेंगे, मगर मेहरबानी करके स्पीकर साहब इस हाउस को अगर चलाना है तो हर एक को मौका देना चाहिए। ये हुलड़बाजी, टेबल पे चढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आवाज दबाएंगे। जहां तक गवर्नर एड्रेस का सवाल है, ये एड्रेस, इस एड्रेस में कई बातें हुई, बेशक हुई, तरक्की हुई, हम नहीं कहते, लैट्रिन भी बन गए, सड़कें भी बन गई। हम मैं उस अशखास में नहीं हूं जो देखे आंखों से तरक्की देखे फिर भी इनका वो सियासत है। मेरे वालिद साहब ने ऐसी कभी सियासत नहीं, तरक्की हुई है बेशक, लेकिन सिटीजनशिप का वादा है। क्या उसके लिए अभी भी नाक रगड़नी है दिल्ली दरबार में? जब हम नाक रगड़ते रहेंगे, रगड़ते फिर देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी बार कही, अब किस बात का उनको इंतजार है स्पीकर साहब? अब जब असेंबली इलेक्शन भी होगा, पीसफुल इलेक्शन भी होंगे, लोगों ने अपना मैंडेट भी दे दिया, असेंबली आप कहते हैं कंडीशन। कल हमारे बीजेपी के एक साथी कह रहे थे आप लोगों की वजह से डिले हो रहा है स्टेट को। क्या असेंबली में खड़े होके अपना हक मांगना, क्या इससे भी ये स्टेट इससे मुंसलिक है? क्या स्पेशल स्टेटस मांगने से क्या हम वो बात नहीं मांगे तो ये देंगे, अगर ये मांगे क्या शर्त क्या है ये? स्पीकर साहब, मैं सियासत यहाँ पे सियासत करने नहीं आया, हालांकि हमारी PDP का भी एक अपना मंशूर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अपना मंशूर है, बीजेपी, हम हर एक की मंशूर की कदर करने वाले लोग। हमारे कुछ आज असेंबली की जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये वेल में, लेकिन हमारे कुछ ही खुशनुसी से वो आ गए। शुक्रिया, मेहरबानी करके हमारी तरफ भी तवज्जो दीजिए। एक बात है कि जब गवर्नर एड्रेस पढ़ते हैं, हमारे जो कश्मीरी जवान जेलों में बंद हैं, मैं ऑनरेबल चीफ आपकी वसात ऑनरेबल चीफ जो होम मिनिस्टर की, उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक मीटिंग बुलाए प्लीज के अपने अधिकारी जो है पोस्ट में होम डिपार्टमेंट, जिनके केस इतने ज्यादा स्ट्रांग, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इसमें, उनके केस में नजरसानी। दूसरा पॉइंट जो मेरा है, रिजर्वेशन पॉलिसी, हमारे जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे? जवान आज परसों लिस्ट निकला, उसमें रिजर्वेशन ही सबको है, तो जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी रिक्रूटमेंट ये कहते हैं, हमारे अस्पताल बिल्कुल खाली पड़े हैं, डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से, स्कूल टीचर से खाली है, बिल्डिंगें हैं, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, न कोई इक्विपमेंट्स है, न कोई डॉक्टर है। मेहरबानी करके हमारे जो ये मतलब दिली जज्बात हैं, वो कहे हमें बस ये आतंकवादी और पाकिस्तान का लेबल आने जाए, बाकी जो कुछ इनको मारती है, गालियां दे, हम गालियां लेंगे, सहेंगे, धक्के भी मारेंगे, वो भी खाएंगे, लेकिन 3 बात में मुझे जबरदस्त एतराज है। एक, आतंकवादी
अलगाववादी और पाकिस्तानियों को ये मेहरबानी करके ये कहानी हमने दी। मुझे नहीं लगता इनको कभी किसी को कोई पत्थर भी पड़ा होगा हिंदुस्तान के लिए। बस ये वोटिंग के लिए करते हैं। जब देश के लिए खून की बारी है तो कश्मीर में मेरे मोहम्मद उस्मान भट्ट डाल दिया किसी मैंने 3 मारे गए हैं उसके इस मुल्क के लिए। मेरे वालिद साहब, मेरे 10 रिश्तेदार, इनका कौन मरा है? कुछ नहीं, बस यही आतंकवादी पाकिस्तानी। चलिए कोई तशरीफ रखिए आप। तारिक अहमद साहब, मेहरबानी करके वक्त का ख्याल। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं मुझे आपकी तकरीर सुनने का मुझे भी शौक है, सबको शौक है, मगर महदूद टाइम है। आप जरूर उसका लिहाज करेंगे कि आप एक सीनियर मेंबर हैं। आई एक्सपेक्ट दैट। प्लीज स्टार्ट। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे स्पेशल कैटेगरी में रखा, क्योंकि पहला स्पीकर आज के वक्त जिसे कहा गया कि टाइम का ख्याल रखें। शुक्रिया। सबसे पहले मुझे अजहद अफसोस है, दुख है कि कल ही एक दर्दनाक वारदात हुई कश्तवाड़ में। क्या कर सकते हैं हम? अपने तौर पर कोशा रहे हम सब मिलकर, ऐसा न हो, और सरकार की जिम्मेदारी जहां हो वो भी संभाले ताकि ऐसे दर्दनाक वारदात न हो हमारे वतन में। और दूसरा, इसके साथ ही आज अहम बिजनेस पर, बल्कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस है इस हाउस का, गवर्नर एड्रेस पर शुक्रिया की तहरीक। लार्जर ग्रुप ऑफ अपोजिशन वो यहाँ नहीं। स्पीकर साहब ने काफी कोशिश की, हम गवाह हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो आज यहाँ होते। लेकिन मेरी गुजारिश है, क्या ये मुमकिन है कि आज क्योंकि लास्ट डे है और हमारी आज की रिवायत है कि लंच तक खत्म हो जाता है सेशन, आप लंच के बाद भी रखें, अगर देर तक भी चले, और ब्रेक के वक्त अगर मुनासिब आप समझे, मेरी गुजारिश है आपसे, दीगर आपके अपोजिशन को अपने चैम्बर में बुलाए, उनसे कहें कि अनब जो आपने यहाँ कहा वहाँ कुछ और लैंग्वेज इस्तेमाल करें, आप उनको मनवाएं ताकि इस बिजनेस में वो शामिल हो जाए। उससे हमारा इस हाउस का जो स्टेटस है वो भी बढ़ जाएगा, और उनकी जमात के मुतालिक भी जो कभी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है वो रवैया जो अपनाया गया, उसका भी इस्लाह करने का एक उनको मौका मिलेगा। हाँ, एक बात जस्ट एक तो जो आप कहते हैं कि हमें नमाज के बाद भी बैठना चाहिए, हमें बैठना ही है, क्योंकि टाइम हमारे पास महदूद है। इसलिए वैसे भी जो हाउस के वर्किंग आवर्स हैं वो रूल्स के मुताबिक 5 बजे तक है। 5 बजे तक तो हमें बैठना ही बैठना है, क्योंकि 2 ही सिटिंग से मैं मिली यहाँ मेंबरों को अपने ख्यालात इज़हार करने की। एक तो वो तो है, दूसरी हमने उनको नहीं निकाला, वो खुद चले गए। देखिए, अगर कोई ऑनरेबल मेंबर खुद चूज करता है कि मैं हाउस में नहीं बैठूं, मैं तो जोर जबरदस्ती उसको हरा नहीं सकता। 2 बातें। तीसरी बात, मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि वेल में कोई नहीं आना चाहिए। इसकी वजह है, पहले तो आए, आपने कहा आपने सब्र का सबूत दे दिया, सब्र किया बहुत ज्यादा, मगर इस हद तक किया टेबल पर चढ़ना। यहाँ सेक्रेटरी साहब की कुर्सी पर नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, जूते पहनकर उस पर चढ़ गए। बट एज अ नेशनलिस्ट आई कैनॉट एंड यू कैनॉट टॉलरेट दिस। कोई आए जूते पहन के नेशनल एम्बलम पर चढ़े और नाराबाजी करे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आई विल नॉट टॉलरेट इट, एनीबडी मे टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट। इसलिए मैंने पूरी यहाँ पे हिदायत दे दी है, किसी को वेलमा आने की इजाजत। वही नहीं, हमारे एक ऑनरेबल मेंबर खुर्शीद साहब है, उसने भी आज वेलमा आने की कोशिश की। हमने कहा नहीं, ये जो मैंने हिदायत दी है, डायरेक्शन दी है, ये सब के लिए, ये सिर्फ इस साइड के लिए, ये इस साइड के लिए भी है। यहाँ भी आज कोई कोशिश ऐसी करता तो इसको भी हम बाहर लेते।
لیکن اس کے بعد ہم نے نہیں نکالا. دے لیفٹ دا ہاؤس, انہیں واک آؤٹ کیا. تو آپ تو سینئر ایک آنریبل ممبر ہے یہاں پر, آپ کو رولز کا پورا آپ کو پتا ہے, نالج ہے, اس لیے وہ چلے گئے تو چلے گئے, میں نہیں زور زبردستی لا سکتا ہوں. آپ کنٹینیو کریں. سر, جہاں تک گورنر صاحب کے خطبے کا تعلق ہے, میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ مجھے ایک نمبر کے حصے سے بھی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارے ہاؤس کا ادھیکار کیا ہے, اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ لیجسلیشن کے کون سے ایریاز ہیں وہ جن پر ہم لیجسلیٹ کر سکیں جو ہمارے دائرے اختیار میں ہیں. اور اسی لیے میری خواہش تھی کہ کم از کم ایل جی صاحب اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتے تاکہ آنریبل ممبران کو موقع مل جاتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں پر کتنا اختیار اس ہاؤس کو ہے, آنریبل ممبران کو ہے. بہرحال ایسا ہوا نہیں, لیکن میری ایک گزارش ہے ایل جی صاحب سے, ان کے ایڈمنسٹریشن سے اور موجودہ ہماری سرکار سے کہ یہ جو بزنس کنڈکٹ رولز, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہاؤس, وہ تو آپ وہ فریضہ سنبھالیں گے, آپ کی بصیرت, آپ کا تجربہ, ہمیں امید ہے کہ نئے رولز بنیں گے. لیکن جہاں تک گورننس کا تعلق ہے, اس بارے میں ابھی تک جو امینڈمنٹ لائی گئی ری آرگنائزیشن ایکٹ میں الیکشن سے پہلے ہی, وہ کنفیوژن ابھی ایئر میں موجود ہے, اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری جو پاپولر گورنمنٹ ہے جس کی قیادت عمر صاحب کر رہے ہیں, ان کے دائرے اختیار میں کیا ہے, تاکہ ہم بھی ان کی طرف رجوع کریں اور کن معاملات پر رجوع کریں ایز ممبرس آف دا ہاؤس. اور اسی وجہ سے میری یہ گزارش ہے, اگر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس ہاؤس میں آج, کبھی چاہیے سرکار کو, سرکار ایل جی کی قیادت میں اور ہماری جو سرکار ہے پاپولر گورنمنٹ, بیٹھ کر طے کرنا چاہیے کہ بزنس جو کنڈکٹ رولز ہے گورننس کے وہ کیا ہیں, تاکہ جو آئر میں غلط فہمیاں ہیں یا کچھ کمی ہے جانکاری کی وہ مل جائے. یہ میری گزارش ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک ابھی بحث ہوئی یہاں ریزولوشن پر, ریزولوشن is adopted already. There is no question of opening one more discussion on it. الگ سوال ہے کہ اگر الگ بزنس ہو اس پر ہو سکتا ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا, جو کبھی یہاں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا, وجہ ہے فیصلہ سنایا, لیکن میں ایک شہری ہونے کے ناطے یہاں یہ اعلان کرنے کا مجاز ہوں کہ مجھے وہ ججمنٹ ایک شہری ہونے کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگا کہ ایز سٹیزن مجھے انصاف ملا. میں حق رکھتا ہوں, اور میں یاد دلانا چاہوں گا ان آنریبل ممبران کو جنہوں نے اعتراض کیا اس سوال کو, اس آرگومنٹ کو لے کر, جب آرڈیننس پاس کیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا نے vis-a-vis some certain issues of Delhi governance, Delhi administration, اس کو چیلنج کیا دہلی سرکار نے آنریبل سپریم کورٹ میں. انہوں نے فیصلہ سنایا جو منظور نہیں تھا گورنمنٹ آف انڈیا کو, ان کو الگ لیجسلیشن لانا پڑا پارلیمنٹ کے اندر, اور اسی وجہ سے ایک سٹیزن ہر حال میں اس نے کبھی یہ حق
اس کو اس حد سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی رائے رکھے. رائے بے شک اور ان کو منظور ہو یا نہ ہو کے بارے میں بھی اپنی رائے رکھے. بہرحال یہ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ غلط فہمیاں ہیں. ہم آنریبل ممبران ہیں, ہمیں جانکاری بہت ساری ہے, لیکن اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں موقع بھی ہے اس ہاؤس میں بات کرنے کا. اور آج سوال کیا ہوا ہمارے ساتھ, کاش وہ ہوتے یا کاش وہ ہوتے. اس لیے میں نے درخواست کی کہ پھر کبھی موقع ملے تو ان کے سامنے یہ بات کر لوں گا کہ ایک پس منظر ہے. ہر کانسٹیٹیوشنل کلاس جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا سیکشن جاری تھا, کئی آنریبل ممبر سینئر موسٹ لیڈرز نے مینشن کیا ہے اپنی ڈیلیبریشن میں, ہر کلاس کا اپنا کنٹیکسٹ ہوتا ہے. نتھنگ از آؤٹ آف کنٹیکسٹ. ہمارا جو کلاس کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کانسٹیٹیوشن میں درج تھا 5 اگست تک 2019 370 ایک کنٹیکسٹ ہے. کیا کنٹیکسٹ ہے؟ When the ruler of Jammu and Kashmir was, حقی اختیار تھا یہاں کے حاکم کو, مہاراجا ہری سنگھ صاحب کو, کہ وہ اس سلطنت, اس حکومت کے اس ملک کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرے. He was reluctant to join either of them till 26th of October. This is Maharaja Hari Singh. He was reluctant. اس پر آپ کچھ تو بولے اس ہاؤس میں, ایسا کیوں تھا؟ ایک سوال ہے, unresolved question. اور یہ بھی صحیح ہے, بعد میں جب ریڈرز آئے تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور خود مہاراجا ہری سنگھ صاحب نے اس بارے میں سفارش بھی کی ہے. We have special circumstances, and under special circumstances certain special guarantees are required. جو بعد میں political leadership of the country and political leadership of our state ان کے negotiations میں دور ہو گئے. And that's why ہم نے جو الحاق کیا, that is a negotiated through the instrument of negotiated settlement. الفاظ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے, مناسب ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس سے وزن ملا, طاقت ملی ہے. اور بعد میں جب پاکستان نے کہا کہ یہ ٹیریٹری نزدیک ہے, ہمارے مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے, ہمارا لیجٹمیٹ رائٹ ہے اس پر, that is how the Constituent Assembly of India, not me, sir, not me, not us here, all of us, but the Constituent Assembly of India, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن ملک کو دیا, ایک ڈائریکشن دے دی. شاید وہ لوگ تھے نہیں وہاں, ایک تھے جن کا نام لیا جاتا ہے شیاما پرساد مکھرجی صاحب. He was part of Congress, he was in the cabinet. اور جب 370 وجود میں لایا گیا, through that debate, اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے شیاما پرساد مکھرجی صاحب. And there is no dissenting note from him. 370 پر کچھ اعتراض ہو, صاحب ان سے گزارش ہے میری, اگر کہیں سنیں, تاریخ پڑھ لیں.